Okay. So first of all, what is electrochemistry and what does it deal with? Electrochemistry की अगर हम बात करें, electrochemistry it deals with energy. And whenever we talk about energy, please don't write anything. Keep your pen aside and please listen. Whenever we talk about energy, there are two different interactions that we can have with energy. Humans can have two different interactions with energy. First is transfer of energy. First is we can transfer energy from one body to another body. And the other is transformation of energy. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी, है ना, देन फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर इट और वी कैन ट्रांसफॉर्म इट. एक बात बताइए, एनर्जी गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट चैप्टर did we do this in? Transfer of energy from one body to another body. Does anyone remember? Class 11th का chapter एक है that deals with transfer of energy from one system to another system. कौन सा chapter था वो? What chapter was that? नहीं याद आ रहा किसी को? Thermodynamics. Yeah, very good. Correct. Yes, Faiza. So transfer of energy that talks about the flow of energy or flow of energy from one system to another. और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना, इसी को हीट बोलते हैं. हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो फ्लो ऑफ एनर्जी दैट वी डेल्ट इन थर्मोडायनेमिक्स. Now, in this chapter, that is electrochemistry, we will be talking about transformation of energy. Transformation of energy from one state to another state. ठीक है. जनरली क्या बात करते हैं हम लोग, whenever if I talk about transformation of energy, then humans की tendency ये रही है हमेशा से, we always transform energy to electrical energy या फिर electrical energy से कोई दूसरे energy में हम चेंज करते हैं. For example, all the energy that is stored, it is stored in the form of electrical energy, है ना, and उसी से हम लोग generally use करते हैं. अब दूसरी चीज है, for example, if you are going to run, ठीक है, तो वहां पे भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल आपकी एनर्जी जो भी, ठीक है. बट इन जनरल वी ह्यूमंस व्हाट डू वी डू, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉमन है, अब इलेक्ट्रिसिटी से आपको एनर्जी में चेंज कीजिए या फिर किसी से आप इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कीजिए, बट वी कंजर्व एनर्जी, है ना, जो हम लोग कंजर्व करते हैं एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ हाउ कैन वी स्टोर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी? दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड और वी कैन यूज एनर्जी. अच्छा, एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एनर्जी आएगी कहां से? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, इनिशियल से फाइनल स्टेट में कोई भी चीज जब जाती है, सो दिस चेंज इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन एनर्जी. नाउ दिस चेंज इन एनर्जी कैन बी इक्वल टू 0 और इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. यानी कि to go from initial to final stage, either I do have to not give any energy and neither it is going to give out some energy. Dusra, what can happen, I have to give energy in order to make the transformation, that is the positive case. और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, in which you have to give an energy. Now when we change from initial to final stage and it is accompanied with a release of energy, that is when we have negative change and that is spontaneous process. तो जब भी spontaneous process होता है, we try to transform that delta E, that energy that is given out, to electrical form. ठीक है. In general, largely the chapter will be based on this, that we are changing some kind of energy to electrical energy and that energy will be chemical energy. तो हम लोग क्या करेंगे? Please remember, whenever we have spontaneous process, इसमें हम एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको. फॉर एग्जांपल, वाटर इज फॉलिंग डाउन. वाटर जब नीचे गिर रहा होता है फ्रॉम अ डैम और समथिंग, देन व्हाट हैपेंस, द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ठीक है. इनिशियल से फाइनल आने में एनर्जी डिक्रीज कर रही है. सो डिक्रीज कैसे करेगी? द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना. और काइनेटिक एनर्जी क्या मूव करता है? टर्बाइन मूव करता है. उस टर्बाइन से फिर हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो वेरेवर देयर इज अ स्पॉन्टेनियस चेंज,
that will be used to generate electricity, और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज किसके लिए कर सकते हैं, टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप नोट लिखिए, स्पॉन्टेनियस change can be used, spontaneous change can be used to generate electricity or generate electrical energy, or we can write electrical energy can be used to bring about non-spontaneous change। ठीक है, that means we will be talking about two different type of cells। सेल क्या होता है, सेल इज अ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मशीन जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। So spontaneous change can be used to generate electrical energy, and electrical energy can be used to bring about non-spontaneous change। जो non-spontaneous change है उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। Okay, now this type of spontaneous change which deals with chemical energy, यानी कि कोई ऐसा chemical change that is spontaneous in nature, it can be used to generate electricity। तो इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। And the cell which uses electrical energy to bring about a non-spontaneous chemical change, इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, नेक्स्ट आप लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ सेल्स वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, हम लोग मेन देखेंगे केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप लोग चेंज कीजिएगा, तो कौन सा सेल यूज होगा, गैल्वेनिक सेल। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके कोई केमिकल चेंज लेके आइएगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए, आई होप एवरीवन इज डन। Please write some important terms। नंबर 1 लिखिएगा, oxidation। What is oxidation? It is loss of electron, or we can also talk that it is, tell that it is gain in oxidation state। किसी का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ता है तब भी हम क्या बोल सकते हैं, it is also known as oxidation। For example, we have zinc, when zinc give 2 electrons, it gets 2 positive charge। तो जिंक यहाँ पे 0 था, 0 से 2 पॉजिटिव, तो गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकल गए, जिंक से बाहर निकल गए, दैट इज व्हाई आल्सो इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Write the second, reduction। What is reduction? Tell me guys, याद होगा बाकी लोगों को। What is the reduction? Gain of electron ना, क्या हो गया, चुप है सब कोई, gain of electron, or we can also talk that it is loss in oxidation state, loss in oxidation state। Third, redox reaction। Redox reaction क्या होता है, there is a reaction in which oxidation and reduction both are taking place। अच्छा, रिडक्शन का एक एग्जांपल लिख लीजिए ना, copper 2 plus
plus 2 electron gives you copper solid. ठीक है, this is reduction. What will be redox reaction? And oxidation reduction reaction. For example, Zn plus copper 2 plus gives you Zn2 plus and copper. तो कॉपर का रिडक्शन एंड Zn का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन. राइट, फोर्थ पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट. Compound that dissociate, please write compounds that dissociate to form ions in liquid phase or molten phase. लिखिए electrode. Electrode is the surface at which oxidation or reduction takes place. Moving on. Hope all of you have written these points. Now please don't write anything. ठीक है, don't write anything and just listen. ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. In the very initial phases of electrochemistry, when electrochemistry was just in its thought phase, है ना, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह अभी तक नहीं हुआ था, उसके ऊपर सिर्फ बातें हो रही थी. Then in that scene, the first step towards electrochemistry was that some of the elements in periodic table they tend to lose electron. है ना, वो electron lose करके क्या बना देते हैं अपना? They lose electron and they get into the noble gas configuration. And there are some other species which gain electron and they acquire the noble gas configuration. तो बहुत ही basic example है उसका, that is NaCl. Here sodium has 1 electron और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. So obviously this electron can be transferred here very easily and this process will be what? It will be a spontaneous process because sodium is also acquiring noble gas configuration, chlorine is also acquiring noble gas configuration. So this will be what? This will be completely spontaneous. ठीक है. Now this is still in the thought phase, है ना, अभी इसके बारे में सिर्फ theoretically बातें चल रही हैं. So अभी experimental basis के ऊपर कि क्या हम लोगों को कंटेनर लेना पड़ेगा, कि गैस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वो सारे सवाल नहीं हो रहे. अभी सिर्फ थॉट्स इसके बारे में बातें हो रही हैं. बिकॉज आप देख सकते हैं क्लोरीन तो ऐसा कभी क्लोरीन मिलेगा नहीं आपको, नेचर में क्लोरीन आपको मिलेगा Cl2, लेकिन बात करने के लिए अभी ठीक ठीक है ना, धीरे धीरे उसमें जो भी लिमिटेशंस होंगे उनको धीरे धीरे देखा जाएगा. अच्छा, यानी कि इफ आई हैव सोडियम हियर और हम क्लोरीन को यहाँ पे रखें और इन दोनों के बीच में एक वायर बांधे, है ना, अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ कहाँ पे, इट इज स्टिल इन द थ्योरेटिकल फेज, है ना, अभी वो सिर्फ बातें हो रही हैं इसके बारे में कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या. एंड यहाँ पे सोडियम जो है ना, सोडियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सोडियम इज रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग विच इज व्हाट इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज एनीथिंग दैट इज इजीली रिड्यूस्ड. ओके, इफ आई कीप अ ऑक्सीडेशन स्पीशीज, जो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है at one place, and chlorine, that means anything which can get reduced easily at the other place and connect them with a wire, then sodium will give electron and chlorine is going to receive electron. So when the electron is passing through this wire, we can put up a bulb and this bulb will blow up जब electron का यहाँ से transfer होगा. ठीक है. Now they said okay fine, as per theory हमारे पास एक oxidation होना चाहिए, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए, एक रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए,
And then what we can say, then we can build a cell, in which electron is transferring, and वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं. Now, moving on, next आप लोग देखिएगा. Here the problem was sodium is very soft metal, chlorine यहाँ पे है, it is a gas. So then they started looking up for species or elements which will be appropriate for this type of use. So वहां पे आते हैं D block elements. D block elements, all the metals are very hard and they can be used very easily. Now, they took a container like this, and वहां पे they had dipped zinc metal in ZnSO4. यहाँ पे क्या आपके पास, you have zinc metal. Here the zinc is in Zn form, और जो solution है वहां पे zinc कौन से form है, Zn2+. Now, whenever you have this type of solution, then what should always take place? There is a reaction that constantly takes place, जो equilibrium में होता है, that some zinc from the rod gets transferred into the solution as Zn positive, leaving 2 electrons in the rod. And when it leaves 2 electron in the rod, तो ये Zn2+ किसके तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा, and this Zn2+ will acquire the electron and it will transform into zinc. Now this process always happens. ये चीज अब दूसरी चीज जो पता थी लोगों को, that whenever you have a metal dipped in the solution of its salt, then the metal and the ion in the salt, the metallic ion in the salt, they are always in equilibrium. So they took 2 different metal atoms, zinc and copper, and they tried to make a cell. यहाँ पे सेल देख लीजिए किस तरह से बनता है सबसे पहले, and then you don't write these things अभी, ठीक है ना, टाइम देके आराम से लिखिएगा इनको, अभी समझिए, because still the theory is going on, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, how everything will work has not been decided yet. ठीक है, so this is one container, and this is another container. ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं बल्ब. Here we have ZnSO4. This is zinc electrode, and this is CuSO4. ठीक है. Now there are a few things जो लोगों को पता था, जैसे आप लोग को पता है ना कि Na की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, उसी तरह से लोगों को पता था कि जिंक की जो टेंडेंसी होती है, जिंक हैज अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ये सिर्फ फर्क किसका, लेवल ऑफ नॉलेज का है ना, कितनी इंफॉर्मेशन किसको पता है. ऑल ऑफ यू नो सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों, है ना, बिकॉज इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस. अब ये बात 8 क्लास के बच्चे को नहीं पता, आपको पता है, लेकिन उसी तरह से जो साइंटिस्ट है उस वक्त उनको पता था कि जिंक की टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन, कॉपर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. सो दैट इज व्हाई दे मेड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेल, और दिस सेल वाज नेम्ड एज डैनियल सेल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लीज अभी बनाइएगा मत इसको, ठीक है ना, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, प्लीज अभी बनाइएगा मत. इन द सॉल्यूशन व्हाट इज प्रेजेंट, Zn2+ इज प्रेजेंट, and here what is present also, SO4 2 negative is present. यहाँ पे क्या है आपके पास, here you have SO4 2 negative, और यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 positive. ठीक है, now in this case what is going to happen, जिंक जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिंक will lose electron, and since copper, अब दो चीजें हैं, Zn2+ can also eat up the electron, or what can happen, the electron can move towards these wire and it will reach this particular container, the copper container. Now in the copper container it will, please see, reaction क्या होगा जिंक वाले कंटेनर में, जिंक will give you Zn2+,
जो चल जाएगा सोल्यूशन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। प्लीज इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। दिस जिंक इज कमिंग फ्रॉम रॉड, दिस Zn2 plus is going to solution and this 2 electron is going to rod। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पानी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, रॉड में ही रहेगा। नाउ द 2 electron from zinc compartment reaches copper compartment। कहाँ पहुंच गए वो? कॉपर कंपार्टमेंट। एंड इन कॉपर कंपार्टमेंट इट सीज 3 डिफरेंट थिंग्स। इसको दिखता है SO4 2 नेगेटिव, इसको दिखता है कॉपर रॉड, एंड व्हाट डज इट सी? इट आल्सो सीज कॉपर 2 प्लस। नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन विल रीच SO4 2 नेगेटिव? रिपल्शन अट्रैक्शन क्या होगा बताएं जरा। व्हाट विल हैपन व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन विल इंटरैक्ट विद SO4 2 नेगेटिव? जब 2 इलेक्ट्रॉन को SO4 2 नेगेटिव दिखेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? Tell me guys what is going to happen? नहीं, SO4 2 नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा? अरे वो नहीं पूछ रहे हैं हम। 2 इलेक्ट्रॉन है और SO4 2 नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन? आप तो जो रटी रटाई चीजें बता रहे हैं फहद। 2 इलेक्ट्रॉन और SO4 2 नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा? हाँ ठीक है, तो एक एक चीज को समझिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट के चलेगा कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कोई बोले कि कॉपर 2 प्लस उसको खाएगा, देन व्हाई कॉपर 2 प्लस, व्हाई नॉट कॉपर, व्हाई नॉट SO4 2 नेगेटिव? 3 थिंग्स वी हैव हियर, प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली। Here we are having 3 things. We have copper rod, we have copper 2 plus in the solution, and we have SO4 2 negative. The 2 electron is reaching the copper compartment, not कोई एक species के पास नहीं जा रहा है वो. It is reaching the complete copper compartment where it will be welcomed by 3 species: copper, copper 2 plus, SO4 2 negative. Now, when the 2 electron reaches SO4 2 negative, it will be repelled because SO4 2 negative is negatively charged and the electrons are also negatively charged. तो यहाँ पे कोई interaction ही नहीं होगा. What is going to happen? Nothing will happen here. There will be repulsion. अब आई बात कॉपर की। अब आई बात किसकी? कॉपर की। नाउ प्लीज रिमेंबर, कॉपर इज अ मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। दैट इज वाई कॉपर विल नॉट प्रेफर ईटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आए कॉपर 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। व्हेन दीज 2 विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, देयर विल बी अट्रैक्शन एंड कॉपर 2 प्लस will eat the 2 electron and get converted to copper. And that is why these reactions happen when we have a electrochemical cell, a Daniell cell। ठीक है, ये सारी सब कुछ तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लीज रिमेंबर, ये फ्रॉम रॉड टू सोल्यूशन टू रॉड, ये हमने लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस Cu2 plus is coming from solution, the 2 electron is coming, this is from solution, 2 electron is coming from rod, और ये कॉपर कहाँ पे जाएगा? टू रॉड। कॉपर बन के कहाँ पे जाएगा? रॉड के पास जाएगा। इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना बताएं प्लीज। इरम, फायजा, तारीफ, फहद, क्लियर है सब? ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं आप लोग? अब क्या हो गया है? जब नाम लिया जाता है आप लोगों का तो आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है सर लोग? इम्तहान हो गई है बिल्कुल, आप लोग एकदम बेगैरती की। समझ में आया नहीं आया? इरम टेल मी। यस सर। हाँ तो आप कुछ हाँ ना बोला करें भाई, क्या हो रहा है बताइए इरम। व्हाट इज हैपनिंग इन द जिंक कंपार्टमेंट? यस इरम, व्हाट इज हैपनिंग इन द जिंक कंपार्टमेंट? टेल मी। आवाज नहीं आ रही है आपको इरम? यस सर, हमारी व्हाट इज हैपनिंग इन द जिंक कंपार्टमेंट? टेल मी। ऑक्सीडेशन is taking place। ठीक है, चलिए आप लोग आदि है रटने रटाने के, हम बस अब लिखा देते हैं आप लोगों को, इतना समझाने का क्या फायदा है ना।
फिर आगे एक सॉल्ट ब्रिज बनता है यहाँ पे, है ना, वो हम बस बता देते हैं जैसे आप लोगों को बताने के लिए आप लोग आदी हैं। क्यों बनता है सॉल्ट ब्रिज, व्हाई डू वी नीड अ सॉल्ट ब्रिज, छोड़ देते हैं उसको, है ना। ये एक सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको बना लीजिए आप लोग। दिस इज डैनियल सिल, फिर आगे आप लोग को लिखा दिया जाएगा सब कुछ। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड वी कॉल दिस एनोड, और इस वाले कंपार्टमेंट को हम लोग कैथोड बोलते हैं। Can you please draw this down? Giving you guys 1 minute. Right, next, electrochemical cell or galvanic cell. Galvanic cell. The cell in which spontaneous redox reaction occurs due to which chemical energy is converted to electrical energy ठीक है, then right, in electrochemical cell or the galvanic cell you will have two different compartments. There will be anodic compartment and there will be cathodic compartment. So please write in anodic compartment, जो कि क्या होता है, एनोड होता है. Now this anodic compartment, first of all, what type of reaction will happen? Oxidation will happen here. Oxidation occurs and polarity जो होगी,
That means whether it will be positive or negatively charged. So this will be negatively. This the polarity will be negative in this case. Okay. Anode मतलब oxidation. Oxidation यहाँ पे polarity negative होगी. Right. Next, cathodic compartment. या फिर जिसको कैथोड बोलते हैं. In this case, what will happen? Reduction will occur. Our polarity positive hogi in the case of galvanic cell. Now, the special cell that we have is a Daniell cell. This is also known as copper zinc cell. In this, we have two different compartments. We have a zinc compartment and copper compartment. Please write zinc compartment or at zinc compartment. No, Fahad. Right here at zinc compartment, the reaction that will take place is zinc giving you zinc 2 plus 2 electron. Now this is oxidation. So if this is oxidation, it will be anode. And since these two electrons, these are going to the rod, that is why the polarity is negative. Okay, so it's a negative polarity hoti hai. Right, next, at copper compartment. At copper compartment, the reaction that we have is copper 2 plus 2 electron gives you copper solid. Now, since this is reduction, this will be cathode. And since the 2 electron are coming to the cathode, so cathode should be positive, then only the 2 electron can come, otherwise it cannot come. So polarity here, it will be positive. If I talk about the cell reaction in this case, so at anode we have cell reaction लिखने का तरीका ये होता है, anode लिखिए आप, anode में reaction क्या हो रहा है, and cathode में reaction क्या हो रहा है, and then you balance out the number of electrons in anode and cathode reaction, and then you can write the complete cell reaction. So at anode we have zinc giving zinc 2 plus 2 electron. In cathode we have copper 2 plus copper giving copper 2 plus 2 electron, giving you copper solid. 2 electrons and 2 electrons will cancel out each other, and the cell reaction that you will get is copper 2 plus zinc giving you Zn2 plus copper.
Right, next, salt bridge. It is inverted. It is inverted U tube. Inverted U-shaped tube is U-shaped tube containing solution of inert electrolyte with agar-agar or gelatin to convert into semi-solid form. So the electrolytes that we can use for this purpose is KCl. We can also use KNO3, NH4NO3. Right, next, functions of salt bridge. In the functions, please copy these statements. After you are done writing these statements, you write next topic, that is the observation made in electrochemical cell. Or rather, galvanic cell, in galvanic cell. Number one observation is mass of anodic rod will decrease. Second observation is concentration of metal ion at anode. That means the anodic compartment, the concentration of metal ion at anode will increase. Third is mass of cathodic compartment. Cathodic rod is going to increase, and the concentration of metal ion at cathode will decrease. Next is the electron flow. Electron flows from anode to cathode. Right, the last statement, which is also the same thing. If the salt bridge is removed, then voltage drops to 0.
cell stops working, लिखिए cell stops working if salt bridge is removed. Right, next, self representation. Now, cell representation, a simple way of writing a cell is remembering A, B, C. A is for anode, the B is for bridge, we show the bridge like this, and C आपके पास है cathode. C is the cathode. ठीक है, तो anode half cell or the anodic compartment, जो कि anode में whatever reaction is happening at the anode, it is always written on the what on the right. Then, sorry, on the left and on the right we write the cathode half cell. Now, these two separations is इन दोनों के बीच में क्या आएगा आपके पास? You will have a bridge. Then next thing is please write. ये तो आपने लिख लिया, ऐसे लिख लीजिए. The anode half cell is always written on the written on the left, then the bridge is represented by two vertical lines followed by cathode half cell on the right. Next thing, separation of two phases is shown by vertical line. Separation of two phases is shown by by single vertical line. ठीक है, जरूरी नहीं वर्टिकल हो, आपको मतलब ऐसे जरूरी नहीं, इस तरह से भी रह सकता है. ठीक, so this is also almost like straight. For example, अगर हम बात करें copper 2+ eating 2 electrons and giving copper, then what is the phase that is changing here? Copper यहाँ पे किसमें है? Aqueous phase में, and the copper here is in the solid phase. इसको ऐसे लिखते हैं copper 2+ / copper. ठीक है, so copper 2+ इसमें change हो रहा है, copper में change हो रहा है. But in case we have something like this, zinc giving Zn2+ and 2 electron. Now in this case, you will write the zinc first, followed by Zn2+, and this shows that zinc is getting converted to Zn2+. Okay, this is how we write the different oxidation and reduction reaction. Next, you will write
terms like pressure of gas, comma concentration of ions, etc., are indicated immediately. Indicated in brackets लिखेगा, indicated in brackets immediately after writing the substance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कॉपर हम लोग यूज कर रहे थे दिस वाज 0.1 मोलर, ठीक है, जो जिंक यूज कर रहे थे दैट वाज 0.2 मोलर। अब हमारे पास इसको कैसे लिख देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपके पास? एनोड आएगा। एनोडिक का पार्ट कौन सा का? जिंक, जिंक टू जिंक 2 पॉजिटिव। दूसरी चीज आयन का कंसंट्रेशन होता है, मेटल्स का नहीं होगा, तो Zn2+ है 0.2 मोलर लेट्स सपोज। आपके पास सेल जो पूरा सेल लिखा है वो इस तरह से लिखा है Zn getting converted to Zn2 positive which is 0.2 molar, and then in we have the salt bridge, copper आपके पास है 0.1 molar, तो copper 2+ in bracket 0.1 molar and then slash copper. So all of these terms are zinc to getting converted to Zn2 positive which is having a concentration 0.2 molar, copper to positive is getting converted to copper, copper 2+ का concentration is 0.1 molar, and here we have the bridge. So this is the complete representation of the cell. अच्छा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है? Zn2+ की जगह मान लीजिए यहाँ ZnSO4, so you can also write this as Zn is getting converted to ZnSO4 0.2 molar, salt bridge CuSO4 0.1 molar and copper. भले ही यहाँ पे ZnSO4 and here we have written CuSO4, but both of these things mean Zn2+ and copper 2+. SO4 2 negative has no role in this reaction. It is acting as a spectator. यहाँ पे बस वो देखने का काम आ रहा है, उसका कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। Okay, please write this down. I hope all of you have written this. No. Represent the following cell reaction as galvanic cell. Right? Copper 2+ plus Mg giving Mg2+ plus copper. B में लिखिएगा
2Al plus 3Cu2 positive, giving Al3 positive plus 3 copper. Please do this and send the answer on WhatsApp. I'm giving you guys 3 minutes for this. Three minutes are done. No answer. तो एक हम आपको बता देते हैं, and then try the second one on your own. The cell representation happens with ABC. Anode, bridge and cathode. So you have to identify what is anode and what is cathode. Anode में हमेशा oxidation होता है, cathode में हमेशा reduction होता है. If I look at the copper one, then what is happening here? Copper is getting from 2 positive to 0, and that is why it is reduction. Mg is going from Mg to Mg2 plus, that is why it is oxidation. So first of all, oxidation will happen. That means Mg getting converted to Mg2 positive, bridge, and in reduction cathode में क्या हो रहा है? Copper 2 plus is getting converted to copper. Then right, copper 2 plus getting converted to copper. Giving you guys another 2 minutes to try the next question. You saw that everything is fine. Whatever you have written in bracket as 2 and 3, that is not required, because that is not the concentration, it is just the stoichiometry for a reaction.
Yes, sir, everything is fine. You just don't need to write the 2Al and 3Cu2 positive, and those things you don't have to write. Also, please have good space between the anode, the bridge, and the cathode. ऐसा नहीं लगना चाहिए सब एक साथ ही. ठीक है, so have good space between these things. Otherwise everything is fine. आपने anode सही से choose किया है और cathode भी सही से choose किया है. Representation could be a bit better. That's it. Right, next question. Write the cell reaction occurring at following cells. I have not got answer from Tarif and Faiza. Faiza, tell me, क्या दिक्कत हो रही है? Can you identify oxidation reduction? Yes or no? Tell me, Faiza. Last time I'm asking Faiza. If you are not able to identify oxidation reduction, please let me know. Turn your mic on. If your mic works, please turn your mic on. Faiza, is your mic working or not? Tell me. Yes, sir. Look at one of the species, aluminium, the reactant and in the product. What do you think? Oxidation or reduction? You know what is the definition of oxidation and reduction? Yes or no? Yes, sir. Okay. So tell me, what is happening to aluminium? Oxidation. Oxidation. Yes, sir. And what is happening to copper? Reduction. Reduction. So you identified oxidation reduction. Okay. अब लिखेंगे क्या? How do we represent cell? Tell me. क्या याद रखने के लिए कहा है हमने? How do we represent cell? How do we represent cell? What I have told to remember. General representation is Anode, cathode. A B C. क्या याद रखने के लिए बोला है? Tell me. ABC, anode, B and cathode. ABC, sir. Yes. What is anode? What reaction is happening at anode? Aluminium is getting transformed to Al3 plus. कैसे लिखेंगे? Aluminium, then vertical line, Al3 plus. Yes, yes. Bridge. What is happening in copper? Copper 2 plus is changing to copper. Please write this down. Then write the next question. Write the cell reaction occurring at following cell. Number 1, nickel plus. I have to give you cells, na? Let's look up nickel to positive. Bridge. Then you have Ag positive getting converted to Ag. First one. Write the second one. Zn to Zn2 positive. Bridge. And here we have H plus to H2. देखिए पहले हम करके आपको बताते हैं. Then you will try the next one. First of all, you will write the anode reaction and cathode reaction. In anode, nickel is getting converted to nickel 2 plus.
nickel 2 plus and 2 electron. In the cathode, Ag positive is eating up an electron and getting converted to Ag. Before writing cell reaction, you should remember that the electron must be balanced. क्या balance होना चाहिए? Electron must be balanced. The number of electrons in anode will be equal to number of electrons in cathode because anodic compartment से electron जा रहा है cathodic compartment. So obviously both of them should be equal. So you either divide by 2 in the first equation or you multiply by 2 in the second equation. So multiply by 2 करेंगे तो 2, 2 and 2. ठीक है? And what you can see, you can cancel these 2 electron and this 2 electron. तो आपको क्या मिलेगा? You will get the reaction as nickel plus 2 Ag positive is giving you nickel 2 plus 2 Ag. Okay, so similarly to the next one. I'll be giving you guys 3 minutes for this. 2 minutes will be enough, not 3 minutes. Write the question properly. I've written Zn is getting converted to Zn 2 plus. 2 plus है, 1 positive नहीं है. Iram, how many hydrogen are present in the left hand side? Tell me. In the left hand side of the chemical equation, how many hydrogens are there? 1, Sorry. Keep your mic on. How many hydrogens are there on the left hand side, Iram? आपने जो 1, equation लिखी. 12. How many hydrogen atoms are there? Mike, it's wrong. See here, guys. At anode, we'll have zinc getting converted to Zn2 positive and 2 electron. In cathode, we have H plus getting converted to H2. So H plus is getting converted to H2. तो H plus कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? H plus सबसे पहले देखिए किस पे कन्वर्ट हो रहा है? H2 में. So obviously these are 2 hydrogen. तो पहले तो atom balance करेंगे. So 2H plus. Now 1H plus will eat 1 electron. 2H plus will eat 2 electron. So these are balanced. The cell reaction will be equal to Zn plus 2H positive, giving you Zn2 positive plus H2. Very good.
Can you please write this down? Right, next, electrode potential. All of you understood these things, na? Yes or no? Please tell me. If you have not understood, please let me know. You are going from the cell representation, from a cell reaction to cell representation, and vice versa. That is cell representation to cell reaction. If you have any doubt, please let me know. Otherwise, we'll move on. Electrode potential, please write the potential developed between the potential developed between metal electrode and its ion in solution and its ions in solution is called electrode potential. Right, next point. The potential developed between metal electrode and the solution of its ion at 1 molar concentration and 1 molar concentration, comma, 1 bar pressure and 298 Kelvin and 298 Kelvin temperature is known as standard electrode potential. Right, next, there are two types of electrode potential. Number one, oxidation potential. Reduction potential. Write the first topic, oxidation potential. What is oxidation potential? Please write.
the electrode potential for oxidation half cell for oxidation half reaction. Cell reaction is the complete reaction. Anode में जो reaction होता है, that is oxidation. So that is the oxidation half reaction. Cathode में जो reaction होता है, that is reduction. That is reduction half reaction. For example, you have metal in its solid state. It is getting converted to N positive, and it loses N number of electron. Now this is what? This is oxidation. It will be shown as E of M getting converted to Mn positive. This will be what? Whatever potential difference is present, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Oxidation potential. Now oxidation potential, qualitatively speaking, it is tendency to get oxidized. Tendency to get oxidized. ठीक है? So the tendency to get oxidized, इसको अगर आप qualitative terms में पूछेंगे क्या tendency oxidize होने की, तो उसको हम क्या लिखेंगे? Oxidation potential के हिसाब से लिखेंगे. Is right? Greater the oxidation potential, greater the oxidation potential, greater will be the tendency to get oxidized. Next लिखेंगे reduction potential. Same thing. Electrode potential for reduction half reaction. The electrode potential for reduction half reaction. So when you have Mn positive, so this is already in oxidized state, it will use N number of electron to get converted into M solid. This is the reduced state. Now here, what is the change happening? So the electrode potential will be for N positive getting converted to solid. So this will be what? This will be the reduction potential. Now what is this? Tendency to get reduced. Greater the reduction potential, greater will be the tendency to get reduced. This is for today, reduction potential and oxidation potential. And then we will look into detail of oxidation potential and reduction potential in the next class.
Please stay in the class for the assessment. And the topic that will be tested in the assessment is only representation. A simple introduction जो हमने कराया है and the representation will be tested. Okay, please stay in the class. Thank you guys. Thank you very much. I hope all of you have written. Please